by reduction of alkynes, and we know this. It's not that complete reduction of alkynes would happen, partial reduction of alkynes. So let's write partial reduction. So when we say partial reduction, we mean to say that we are going to add some of the hydrogens to only one of the bonds in alkyne. So we'll eventually have a double bond alkene. So let's say I'm having an alkyne. So that's the general equation. And we add hydrogen to it. We can use nickel and heat. So initially it will form what? An alkene. And eventually it can lead up to finally alkane, but that's not right now what we are looking for. We are only looking for alkynes to alkenes. So example can be ethyne converting to ethene, nickel and heat, quite simple reaction. Achha. Now we can also use the same reaction with nascent hydrogen or atomic hydrogen. So that's one of the reactions for reduction. The other reaction can have been written like something like this. So nascent hydrogen or atomic hydrogen, conditions here are different. So it is basically known as Lindlar's catalyst. Lindlar's catalyst. एक दफा का जिक्र है कि ये पूछा गया था AKU में. So what is a Lindlar's catalyst? It is a mixture of palladium with calcium carbonate or limestone. So what we have here is an alkene. अच्छा, I never wanted to add here कि यहाँ पे isomers का भी differentiation कर सकते हैं. So by this we are going to have a cis isomer. लेकिन अभी क्योंकि you guys know what is isomerism and all, so I can kind of write a name that won't confuse you, but हम ये करेंगे detail में आगे जाके कि what is a cis isomer, what is a trans isomer and all. उसमें ये reaction फिर से आ जाएगा दोबारा से. तो इसीलिए it is not part of this syllabus, but naturally question बन जाता है, sir, okay, if we use Lindlar's catalyst, so we have a cis isomer, तो फिर trans isomer के लिए क्या होता होगा? So trans isomer के लिए we have something else. So can I change the slide? This is a very good question. So this is what I was waiting for. हमने तो सिर्फ इसकी बात की ना, प्योर ईथीन की बात की है. तो अगर मेरे पास यहाँ पे लेट्स से एक हैलाइड ग्रुप भी अटैच होता, क्योंकि जनरल इक्वेशन की हमने बात की है, सो उसमें भी आइडेंटिकल कार्बन्स पे ही एडिशन होगी. ठीक है भाई, क्योंकि फिलहाल वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट जनरल रिएक्शन, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना. सो वी हैव नॉट स्पेसिफाइड दैट. So whatever the reagents are, with the Lindlar's catalyst, we are going to have a cis isomer. That needs to be understood here. Okay. So now how can I have a trans isomer?
So for that same general equation, if I add up hydrogen and if I use sodium with ammonia gas, it's liquid ammonia. So ammonia liquid भी कहते हैं इसे. ठीक है, ये this is not written in any of the textbooks. Never have I seen it, but मैंने सिर्फ आइसोमर वाला क्वेश्चन देखा था, तो मैं naturally आपको ट्रांसफर भी करवा रहा हूँ. So this is known as Birch reduction. That's the name of this catalyst. So we can now have a trans isomer. Again, you only have to learn the idea कि यहाँ पे अब कुछ ट्रांस आइसोमर वाली चीज बनने वाली है. That's it, खत्म. अब वो कहाँ से बन रही है, किस reagent से बन रही है, we're not bothered about that. The only thing what we need to know is कि इस reaction से we're going to have a trans isomer. Number 6. Cracking of alkanes. That can also be added. So if we have, let's say, अब बहुत सारी equations इसकी बन सकती हैं. अगर आपको कोई याद है तो आप लिख सकते हो. We can start up with a complicated alkane, a long chain alkane. Let's write it here, a long chain alkane. ठीक है, and we heat up, if it is not catalytic cracking, तो 600 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं, तो शॉर्ट चेन अल्केन बन जाएगा. ठीक है, उसके साथ कोई ना कोई अल्कीन बन जाएगा. सो इसकी देयर आर मेनी एग्जांपल्स. ठीक है, बट मैं यहाँ पे समझाने के लिए अगर ले लूँ ब्यूटेन ले लूँ, इसको मैं हीट कर दूँ टू 600 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे पास बनती है मीथेन, के साथ साथ मेरे पास बनता है प्रोपीन. So this can be one of the examples. अच्छा, okay. Now the good part would be, जिसको भी थोड़ा सा पैटर्न याद है, can you guys write some of the chemical reactions for alkenes? Meaning thereby, what would alkenes do? We know that alkenes are basically characterized or identified by addition reactions. सही है? So if that's a possibility for you guys, कि आप मुझे alkenes के कुछ reactions अपने notebooks पे journals पे लिख के WhatsApp कर दो. So let's see सबसे ज़्यादा कौन करता है. और please do it by your only logic. Don't need, you guys don't need to open any journals or all. बस जो याद आ रहा है ना उससे एडिशन करके दिखा सकते हो मुझे alkenes की. मे भी कुछ अच्छे होंगे तो उनको ऑक्सीडेशन भी याद होगी. So since this is all the techniques that involve preparation of alkenes, हो गई. Now moving to the other topic would be chemical properties of alkenes. So I want to have an idea कि आप में से कितने लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है. Since we all have from different backgrounds, so I want to have an idea कि आप किस तरह से इसे लेके चल रहे हो. So I'll be in a better position to explain that. Are the instructions clear to everyone? You guys need to do कि आपको chemical reaction जो भी alkenes के relevant याद आते हैं वो journal पे लिखना है and send that to me on WhatsApp. I'll wait for a few minutes, okay?
Yes, Fozan, obviously, these reactions are basically for preparation of alkenes. What I wanted to have an idea is how you're going to have chemical reactivity of alkenes explained. Okay. Hafsa, you can opt for anything you want to. Okay, if you're only suggesting a name, maybe that works well. If you want to write an equation, okay, that works well too. Okay. So I have few of the answers, and those answers are really great answers. ये काफी अच्छे हो गए, जबरदस्त हो गया, सीन ऑन हो गया, लेकिन अभी तक बहुत कम है. I was thinking कि थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है. There is this student वो कहता है dehydration of, it's I think ethanol, right? So that's the preparation, bacha. See, now let me rephrase my question. Maybe I'm not sounding it well. कि भाई, I want you to have a reactant alkene which can produce something else. Very simple. I don't want to have a product alkene. I want to have a reactant alkene. Abhi tak, whatever we have done had what? Had a reactant as a different thing and a product as an alkene, right? अब मैं चाहता हूँ कि reactant alkene हो और आगे कुछ बना के दिखाओ मुझे. Chai. WhatsApp, 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 WhatsApp. So hallucination is a good answer. Reduction is a good answer. Hydration is a good answer. Combustion is a good answer. Hydrohallucination भी पढ़ा हुआ है. जबरदस्त. तो ये कौन है भाई? ये कहता है बच्चा हमारा. This is basically this student is explaining me addition of bromine and addition of hydrogen. जबरदस्त. गुड हो गया, सीन ऑन हो गया. हाइड्रोजनेशन बेसिकली वो होगा ना, उसमें आप फिर एडिशन के रूल्स जो है फॉलो कर रहे होंगे. अच्छा, सो चलो भाई. अच्छा, आई कैन शेयर द प्रीवियस स्लाइड. ये बच्चा है जो एक जर्नल लेके बैठा है, तो प्रॉपर बच्चा है ये जो भी है. अच्छा, इसने इलेक्ट्रो, ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट. दिस स्टूडेंट इज टॉकिंग अबाउट electrophilic addition. That's nice. That's kind of great. Then oxidation आ गई, जो हम सबको याद होती है अल्कीन्स के अंदर, और एडिशन हो रही है. ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड हो गया. जबरदस्त, सीन ऑन हो गया. और भाई जबरदस्त, ये शहजादा जो है ना हमारा, ही या शहजादी, आई डोंट नो, ही इज और शी इज राइटिंग पॉलीमराइजेशन एज एन एग्जांपल. दैट्स ग्रेट. जबरदस्त बड़ी. गुड जॉब. ये तो सीन ऑन चल रहा है भाई. कोई पढ़ाकू टाइप का चीज बंदा बच्चा है ये. खतरनाक बच्चा है ये भाई. अच्छी बात है यार. दैट्स नाइस. तो अच्छा, ये तो भाई वेटिंग रूम वाले तो आ गए अंदर. अच्छा, इसने तो मुझे, इस शहजादे ने तो मुझे दो दो पेज भेज दिए. अच्छा, ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम LGS, राइट?
इट्स अ वेरी फुल साइज पिक्चर, तो डाउनलोड ही नहीं हो रही है। हो जा भाई। अच्छा ओके, दैट्स व्हाई आई थिंक देयर इज अ वैरायटी ऑफ आंसर्स। अच्छा मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा कि यार ये सारे बच्चे अगर एक ही कॉलेज के हैं तो फिर इनके आंसर्स इतने डिफरेंट क्यों हैं? हाइका बेटा, कैन यू हेयर मी? हाइका इज हाइका इन क्लास? Hi, I'm here. Can you hear me? Yeah, I can hear you. I can't see your messages in the chat box. Yeah, I don't know why. I think if I have questions, I'll just message you on WhatsApp. Is that fine? हाँ sure, that's okay then. Not that Okay. upset. अच्छा भाई ये कौन है? ये बच्चा है जो कहता है, ये कहता है कि भाई इसमें सर आप हाइड्रो हेलोजनेशन करके दिखाएं और इसमें ब्रोमिनेशन करके दिखाएं। ओ माय गॉड, दैट्स सच लवली। ये भाई साहब जो है ना वो कर रहे हैं पूरा, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कर रहे हैं। तो दैट्स ग्रेट। जिसने इनिशिएशन किया देन टर्मिनेशन करके दिखाया, दैट्स वंडरफुल। तो अच्छा, मैंने किसी को व्हाट्सएप पे कोई ऐसा है जिसका मैंने जो है वो रिप्लाई नहीं किया हो? आई ट्राइड टू रिप्लाई एवरीवन। ये है कौन खतरनाक बच्चा, इसने ब्रोमिनेशन करके दिखाया मुझे KMnO4। नहीं नहीं, इसमें मसला है एक, मसला। चलो ये वाला तो सही है, इसकी तो कोई टेंशन हमें नहीं है। एक में मसला डाल दिया हमने। अच्छा ये क्या है भाई? सो दैट्स द नेम, एडिशन ब्रोमिनेशन है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे रिएक्शन दिखाऊंगा जो कलेक्टिवली आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। हाँ दिस इज, मेरा बच्चा, दिस इज वन ऑफ द वेरी क्या कहते हैं, कॉमन इशू इन ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो थोड़ा सा मतलब देख लो, सही है, उस चीज़ को देख लो, रिव्यू कर लो। फायदा होगा तुम्हें, A2 में भी फायदा होगा, यू नो इट। ऐसा नहीं है कि फिर फायदा नहीं होगा, वो होना चाहिए थोड़ा सा पहले वाला, कुछ आना चाहिए। अच्छा ये कोई बहुत ही खतरनाक स्टूडेंट है भाई, इसने तो मुझे पूरी जर्नल इक्वेशन के साथ एवरीथिंग इज डन, काम आसान कर दिया। क्या बात है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई और किसी ने समझाई भी नहीं मुझे, ये अच्छा चलो इसको अलग से ले लेंगे। लास्ट वन इस पे कहाँ? Last one is wrong. I think I'll explain it later. ठीक है, ये इसको मैसेज कर दिया हमने। तो आई ट्राई टू यार, इसने एक दो तीन, इसने डिफरेंट ऑक्सीडेशन की बात की बच्चे ने। दैट्स ग्रेट बच्चा, गुड जॉब। अच्छा चलो अब देखो, इन सब से हट के क्या रिएक्शन हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ, अब जो आपने मुझे भेजे हैं ना, आई वोंट बी स्टार्टिंग अप विद दोज रिएक्शन, या उनसे शुरू कर लो? चलो उनसे शुरू करते हैं यार, फायदा हो जाएगा। सो केमिकल रिएक्शंस, फिर उसके बीच में कुछ नए ले आएंगे, सो दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। अब इसमें बेसिकली वी कैन से कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, या आई कैन अंडरस्टैंड वो होते हैं, बट आई एम ओनली राइटिंग एडिशन रिएक्शन, ठीक है फिलहाल। सो दैट यू गाइस कैन लिंक इट, कि सर ने अल्कीन्स पढ़ाते हुए पहली चीजें लिखी थी, तो सर चाहते थे कि हम ये याद रखें कि अल्कीन्स एडिशन रिएक्शंस की वजह से आइडेंटिफाइबल है। जैसे alkanes were not identifiable by combustion, they were identifiable by substitution, ठीक है। तो ये ध्यान में आपके रखने के लिए ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वी से दिस अगेन, आपने नाम सुना हुआ है, सेबेटियो स्टैंडर्ड रिएक्शन। ये आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में लिखा था, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड अप विद एन अल्कीन, राइट,
we can add hydrogen to it in the presence of nickel and around 200 to 300 degrees Celsius. याद आता है ये सब काम किया आपने. Then we had an alkene prepared. Do you get this? ठीक है. अच्छा, इसके बाद फिर इसमें हम एग्जाम्पल आई लीव इट टू यू गाइस, आप लिखो. अच्छा, इसमें फिर एक और काम करते हैं. We'll talk about halogenation. So addition of X2. So starting up with an alkene, we can add halides to it. And what do we call this product? इसे क्या कहोगे? If X is added to both of them. इस प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, शायद याद आ जाए, लग रहे, vicinal dihalides, right? So that's one of the preparation for vicinal dihalide. अच्छा, अब इसमें there has to be some explanation कि X can be, chlorine, it can be chlorine, it can be bromine, it can be iodine as well. First thing, okay. Then decreasing reactivity in the same order. From fluorine to iodine. ठीक है. ये हुई बात. और अब इसके साथ साथ फिर yeah. So if I'm reacting it with adding fluorine to it, so there are no reaction conditions if I'm adding chlorine to it. So that happens at room temperature. If I'm adding bromine to it, so I need nothing is still room temperature पे हो जाएगा ये. If I'm adding iodine to it, तो इसके लिए सिंथ बोर्ड वाले कहते हैं कि यूज इथेनॉल. ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा. तो अब आपको इसके एक एग्जांपल करने को अगर मैं दूं तो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से करते हैं. तो लेट्स डू इट लाइक दिस. कैन यू प्रिपेयर, अब इसमें फंस जाएंगे सब. I don't want you guys to stuck. I have such high hopes from you guys. Let's see क्या करते हो नहीं करो. 1,2-dichloropropane from alkenes. If yes, then how would you do it? इसमें मैंने बेटा हाई का I talked about this, here. If you guys allow me to just change my slide, ये जो है that X can be any of these. ठीक है, this is what I said. Then for if we are reacting with a fluorine, we don't need any conditions.
This is explosive reaction that happens, by its own reactivity. But for chlorine and bromine, we need to have room temperature. For iodine, we need to have ethanol. Then only these reactions can happen. Faiz ने बहुत अच्छा आंसर दे दिया. That's wonderful बच्चा, good job, जबरदस्त. But I would say कि आपने नेमिंग गलत कर दी. Zainab, correct answer. That's great, जबरदस्त. You don't need to explain it with the number, right, Faiz? उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, चाहे इस साइड से काउंट करो चाहे उस साइड से काउंट करो. It is still is the same, right? Mariam got the correct answer, जबरदस्त. Zainab got the correct answer. You know, you guys are great. Hiba got the correct answer. So if I want to prepare 1,2-dichloropropane, so starting up with this, कि let's say कि भाई propane बनाते हैं और 1,2-dichloropropane होगा कैसे? तो 1,2-dichloropropane को कुछ ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन हो, ठीक है? देन वी हैव सेकेंड कार्बन पे भी एक क्लोरीन हो, ठीक है? और थर्ड कार्बन पे सिंपल अल्केन का अल्काइल ग्रुप आ जाए मीथेन या मिथाइल ग्रुप आ जाए, ठीक है? So that is what 1,2-dichloropropane would look like. So ये कहता है कि ये बना के दिखाओ. ओके, बना लिया. Starting up with an alkene. So मुझे इसमें अल्कीन चाहिए यहाँ पे. ओके, आई गेट दैट पार्ट. अल्कीन के अंदर आई वुड ऐड सिंपल क्लोरीन. तो वो अल्कीन कैसा होना चाहिए जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे कुछ ऐड कर सकें. तो वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे उसके पास डबल बॉन्ड होगा, so that only it can add something here. Make sense? So we talked about addition of hydrogen, addition of halogens. Let's move on to third reaction, that is addition of, इसे हम कहते हैं हेलोजन एसिड, ठीक है? और इसे आप क्या भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड. या आई डोंट नो कि मुझे ये guys you have to rejoin.